Hello guys, let's crack the verbal session with example of movies. Yes, I'm going to teach you every chapter of verbal with a movie का example. यार अगर आप मूवी की समरी नहीं निकाल पाए, मूवी का टोन नहीं निकाल पाए, मूवी का फैक्ट और इन्फ्लुएंस नहीं निकाल पाए, तो यार कैट कार से कहाँ से होगा? So the 12 chapters for the next 12 weeks, let's crack the verbal session because verbal session का three main problems is accuracy. नंबर टू इज ट्रैप यार ए एंड बी बहुत क्लोज था उसमें आके पब्लिक फंस जाती है वो सारे ट्रैप्स को वी आर कवरिंग अप हियर सो लेट्स सॉल्व वर्बल विद लॉजिक नॉट वर्बल एंड गेस वर्क लकी ड्रॉ नहीं करना है अभी अभी हमें अपने एक्यूरेटली सॉल्व करना है एंड विद द ब्रेकअप ऑफ एवरी चैप्टर कौन सा चैप्टर कितने मार्क का सब कुछ कवर है इसके अंदर सो गो टू द लिंक ctking.com imking.com/verbal imking.com/verbal you can download this workbook here अगर आप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू दिस इज द कंप्लीट सिलेबस फॉर द वर्बल सेक्शन सो TSPM इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन ट्रूथ एंड फैक्ट्स हर एक का कितना इंपॉर्टेंस है इफ आई लुक एट 31% ऑफ द RC क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन इन्फ्लुएंस अभी पब्लिक को इसमें इन्फ्लुएंस का मतलब नहीं पता सॉल्व कहाँ से होगा सेम फॉर द नॉन RC एज वेल समरी बेस्ड क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 34% ऑफ क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन समरी यार 2 RC कर लो समरी बेस्ड क्वेश्चन ऑड मैन आउट विच इज वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक ये इतना ही कर लो तुम्हारा कट ऑफ निकल जाएगा यार इफ यू बिलोंग टू द जेम कैटेगरी 80 to 90 percentile plus is more than enough to get the IM call. OBC EWS 60 to 70% and for SC ST PW 50 to 70% plus is more than enough to get the call. Yes 50 percentile पे भी कॉल आएगा उतना तो लेके आओ यार ठीक है 50 percentile 60 percentile मतलब 9 marks 10 marks 80 percentile मतलब 15 marks and next target become 97 percentile which is around 30 marks ये हमारे तीन टारगेट हम लेके चलेंगे 9 15 maybe 20 25 and then 30 okay this along with your mocks 30 full length mocks strategy workshops full length sectional test and actual CAT papers is more than enough to clear the cutoff and I'm a very strong believer of the actual papers इजी पेपर आपको सॉल्व करने हैं 2001 से लेकर 2008 के पेपर डाउनलोड कर लो सॉल्व करना शुरू कर दो दे आर द इजीएस्ट कैट पेपर यू कैन गेट देन मीडियम लेवल 2017 to 20 and then actual paper from 21 to 24 all these things I've covered in this workbook all actual papers solving question using all the actual papers all these are CAT actual papers मैंने उसका ईयर एंड में डाला है ताकि हमें सॉल्व करने को मिले सो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन दिस इज मोर देन इनफ टू क्लियर your verbal section. Babaji, एक I am call. The first thing you notice in the verbal workbook is in the index only I have marked every chapter with accuracy because accuracy is one of the most important factor which I want you to track across all the chapter. आगे जाके सपोज मेरे को पता चलता है पैरा जंबल हो गया पैरा कंप्लीशन हो गया स्ट्रेंथ एंड वीकनिंग हो गया एक्सेप्ट इसमें मेरा एक्यूरेसी बहुत लो है then what I'll do I'll not solve this question on the CAT day. What I've been trained for is if I pick up a RC, I'll mark all the question by guesswork. So this is my pointer number 2. We are going to avoid the guesswork. So what we have done in every chapter. So please download this workbook. It's very important for you to download. I've given you one chapter here, which is a summary based question. In every chapter starting, you will find the importance of every chapter. For example, if I look at a summary based question, almost 34% of the non-CAT, non-RC section database question is summary based. That's one of the most important chapter. In fact, this is the first workshop I'm going to take on 4th of August, starting with the G strategy program. So starting में क्या किया? How to guess this thing is number one is I'm giving you a movie का plot. हटाओ सब कुछ. Let's start with the movie का plot and try to solve the question based on movie. PK. 3 Idiots, देवदास मूवी देवदास से अब तुम अगर देवदास की समरी नहीं निकाल सके तो कल को कैट कार से कहां से सॉल्व होगा मुन्ना भाई MBBS हैव टेकन ऑल दोस मूवीज जो नॉर्मली पब्लिक ने देखा होगा गोलमाल ठीक है तो दिस इज द वे आई वांट टू स्टार्ट विद एवरी चैप्टर मूवी प्लॉट इज गोइंग टू बी माय वे टू टीच यू वर्बल क्योंकि हमें क्या आ रही है कि पब्लिक पढ़ता नहीं है most of people don't understand what is the difference between inference and a truth या cause and effect and reasoning में क्या फर्क है strength and weakening argument क्या होता है पहले यही नहीं पता यार पब्लिक चलिए क्वेश्चन मार्क करने आंसर जय माता दी बोल के नहीं वो हम सब नहीं करेंगे we are going to take a informed decision and solve every question. Second thing what I've done is I have identified the traps.
there are 5 traps in, for example, this chapter, summary based question. There are 5 traps. We have to avoid ourselves in this trap. For every question, जब आप question solve करने जाओगे ना, after every question in the solution, you will find obviously answer 3 है, तो answer 3 क्यों है? Obviously with explanation. Eliminate option. The option which are wrong, I've given you why they are wrong. Fine. The scope is limited. It's not committed scope. This is too centric focus. This is exaggeration of the thing. यहाँ पे आके wrong करता. For example, in this question, without even looking at the question, I can tell you commonly people will be confused between option 3 and 4. Both of them are same, but इसने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया. ठीक, इतना नहीं बोलना चाहिए था, पर पब्लिक वहाँ पे आके फंस जाता है. So all these kind of traps are included in this workbook. So these 12 workshops, every week we're going to pick up one topic and complete your syllabus in next 12 weeks. So please download this thing. Summary based आप ये workbook खत्म कर दो with the checklist, how to perform, how to scan the question, how to scan the passage, and how to identify which topic are we talking about, then identify the main claim and then solve the question. So please अगर आप ये download करो, this would be very helpful for you for the CAT exam. And in case you can join the program, that will be the best thing you can do to yourself, trust me. So there are total 12 chapters for the next 12 weeks. Let's complete one chapter every week and crack the CAT exam. All right, all the best.